Good evening and welcome of everybody. Today we are going to talk about rally in the real estate, and we are going to find out that whether the rally is euphoric or genuine. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो रियल एस्टेट की जो रैली हुई है वो यूफोरिक है कि जेन्युइन है। और हमने ये रैली इनफैक्ट अभी पिछले महीने नहीं देखी, ये पूरे पैंडेमिक टाइम से अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट में एक बड़ा लो बना था 2020 मार्च में, जब लो बने थे मार्केट के, तब इन सब स्टॉक्स में एक अच्छी खासी पिटाई हुई और उसके बाद एक अच्छी रैली हमने देखी। और ये जो मार्केट है वो जैसे जैसे बढ़ते गया, रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी हमने तेजी देखी और ये थोड़ा कॉन्ट्रारी था, ये समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इनफैक्ट रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं उनमें हमने और भी अच्छी तेजी देखी आफ्टर इनफैक्ट अनाउंसमेंट ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल्स, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से और भी बढ़ सकते हैं, नॉट फॉर द यूएस इकोनॉमी बट फॉर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। और इसके बाद भी हमने देखा कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स में बिल्कुल भी कहाँ पे भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी उसमें लगातार बनी है और कई सारे स्टॉक्स ने काफी सारे अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि उनके जो फंडामेंटल नंबर्स आ रहे हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं या तो जो क्वेरीज हमें आती है वहां पे एक ही क्वेश्चन होता है कि ये रैली कितनी सस्टेनेबल है। तो आज के दिन में पंकज कुमार हमारे साथ है, जो हमारे एक रिसर्च के एनालिस्ट है और वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स के सेक्टर को देखते हैं, साथ ही साथ उनका कैपिटल गुड्स के साथ साथ रियल एस्टेट में भी काफी अच्छी उनकी एक्सपर्टीज है। और अगर मैं उनको अगर कुछ एक या दो क्वेश्चंस अगर पूछूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे ये समझना है कि जो 2010 या 2009 में हमने जो तेजी देखी थी पंकज, क्या हम उस लेवल्स के करीब आ चुके हैं, क्या उस लेवल्स को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद क्या सस्टेन होने वाले हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है जो सेंसिटिव काफी होता है इस सेक्टर के लिए, और मैंने पास में देखा था कि जब भी ऐसी कुछ न्यूज आती थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि वी सॉ दैट रियल एस्टेट स्टॉक्स tracking from their immediate highest levels. But this time the scenario is completely different. We are seeing upward activity, even though there is specific news flow and expectations that the interest rate can go from here, can go upward from here. इसके साथ साथ मैं और एक पूछना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो रियल एस्टेट जो एक सेक्टर है और यहाँ पे जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आता है जीडीपी के लिए, वो इंडियन मार्केट्स के लिए इज नियरली 13% के आसपास का है। लेकिन जो चाइना एक जो बड़ी इकोनॉमी है वहां पे इसका जो कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी इज नियरली 29%। और यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो या तो यूएस इकोनॉमी के लिए अगर बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन इज नियरली 15 to 18%। अगर इस पर्टिकुलर लास्ट 2 या 3 साल के ओवरऑल ट्रेंड को अगर देखें तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स में या इंडियन इकोनॉमी में काफी सारे बदलाव आए हैं, काफी सारे चेंजेस हुए हैं और काफी अच्छा लोगों का या तो नेटवर्क बना है या तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है। और इसके बाद हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में और भी अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन ये कैसे रहेगा, एग्जैक्टली क्या होगा, इसके बारे में पंकज हमें बताएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जितने भी टॉपिक्स है आप उन्हें भी प्लीज शेयर करना। और आपको ये बताना है पंकज कि क्या हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ओके, सो ओवर टू यू पंकज। थैंक यू श्रीकांत। जैसा आपने ब्रीफ किया है कि ये सेक्टर में अभी ऑफ लेट काफी तेजी आई ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स ऑल्सो, और हमने पास्ट जो साइकिल देखा था जब भी 2008 to 10 के अप्रॉक्स, वहां पर एक तेजी के बाद जो गिरावट आई थी, तो इस बीच का जो दौर है, ये जो दौर रहा है, इसमें काफी चेंजेस हुए हैं जो कि मैं अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू शेयर करूंगा। लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। So the first question that comes in mind of everyone कि ये जो रैली है ये यूफोरिक है या रियली जेन्युइन है।
ये हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हर एक इन्वेस्टर के माइंड में है। इससे पहले मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूंगा सेक्टर के बारे में, कि अगर आप इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को आप देखेंगे तो इसकी जो साइज है करीबन 200 बिलियन डॉलर 2021 में थी। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री का, वो कहता है कि ये सेक्टर यहाँ से 5 टाइम्स और बड़ा हो सकता है बाय 2030। और अगर ये सेक्टर की बात करेंगे in terms of not only from the sector size, but it is also very important from the economy perspective because it generates a lot of employment. तो ये सेक्टर करीबन it is the second highest in terms of employment generation also. तो ये सेक्टर काफी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी इकोनॉमी के। अगर आप देखेंगे ये जैसा मैंने बोला पास्ट साइकिल और अभी के बीच में क्या चेंजेस हुए, तो सबसे बड़ी चीज थी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो चेंज हुई है वो काफी फेवरेबल रहा है सेक्टर के लिए। तो पोस्ट रेरा हमने देखा है जो कि 2016 में आया, उससे काफी चीजें चेंजेस हुई बिकॉज बहुत सारे कंप्लायंसेस आए फॉर द रियल एस्टेट डेवलपर्स। उसके वजह से जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च होती थी पहले कंप्लीट नहीं हो पाती थी, अप्रूवल प्रॉपर नहीं होते थे। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स पहले सारे आपको अप्रूवल लेने होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वो रेरा वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं डेवलपर के बारे में। प्लस उसमें काफी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस भी होती है कि वो डेवलपर्स को मीट करना होता है। तो ये गेम चेंजर था फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। अगर आप ओवरऑल रैंकिंग इंडियन रैंकिंग की बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी के टर्म्स में, तो इंडियन जो रियल एस्टेट है उसने करीबन 5 रैंक इंप्रूव भी किया है ऑफ लेट, और ये करीबन अभी 34th रैंक पे आता है। और इन टर्म्स ऑफ transparency, so that is a big thing. Apart from that, government has also allowed FDI in the real estate sector, where up to 100% FDI is allowed for the township project. So ये काफी बड़ा step था from the investment perspective also, because of that lot of foreign institutions also got into the market. और जो गवर्नमेंट का जो विजन है कि हाउसिंग फॉर ऑल, जो कि बाय 2025 गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है, करीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं। इसके वजह से भी सेक्टर में काफी बूस्ट आया। लॉट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आल्सो गॉट लॉन्च। अगर की ड्राइवर्स हम देखते हैं, जैसा मैंने राइट साइड में जो पिक्चर में दिखाया है कि जो अर्बनाइजेशन हुआ या ग्रोथ इन पॉपुलेशन है या फिर न्यूक्लियर फैमिली जो हम की तरफ हम मूव कर रहे हैं, फाइनेंसिंग इंप्रूव हो रही है, एनआरआईज के पैसे आ रहे हैं रियल एस्टेट में। इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम। तो ये जो फैक्टर्स हैं, दिस हैव driven the demand for the sector, and urbanization तो हम जो देख रहे हैं जो ट्रेंड है, by 2030 we expect 40% urbanization vis-a-vis current 1/3. So huge urban population growth, that's what we are expecting in the coming years. Plus the low loan interest rates were also driving the demand, and even a lot of NRIs has also got into Indian real estate market. Due to that, lot of projects which were at the beginning stage, at the launch stage, also got the boost because they got the funding at the initial stage of the development. अगर जो हम अगले स्लाइड पे बात करेंगे कि ये यूफोरिक है या फिर जेन्युइन है, तो करंट जस्ट जैसा मैंने बोला पास्ट साइकिल में ये जो गया था मार्केट ऊपर, रियल एस्टेट इंडेक्स जो बीएससी रियल्टी इंडेक्स है, फिर ये नीचे आया और यहाँ पर करीबन जो रेरा आया, यहाँ से आपने अगर देखा होगा तो एक रैली आई धीरे धीरे सेक्टर में। और ये जो बड़ी रैली हमने अभी इधर देखी है, ये कोविड के टाइम देखी है। और ये रैली, इसी में क्वेश्चन आ रहा है कि ये कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर हम देना चाहेंगे। हमें ये लगता है कि ये रैली जो जेन्युइन लगती है, इसके पीछे रैशनल है, जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे द कमिंग स्लाइड। So we see robust demand in the residential space. If you see the overall numbers, the sales number with respect to the last quarter has been quite strong. India's that residential sales number has grown at 86% to 186 billion square feet in Q1 FY23. And among the key cities which has drove this growth is Bangalore, where 2.1 times growth that we have seen in the last quarter. This is followed by Mumbai, where we have seen double growth, almost 2x of growth, and Gurugram, which has grown at 83%.
So these are the top three markets which contributed to this 86% growth that we have seen in Q1. And if you look at the last year also, so last year FY22 also, the whole trend was quite strong. The growth, the sales was 28% for the fully all India base, on an all India basis, and it was roughly 646 million square feet, with Gurugram and Bangalore leading that growth, and Mumbai also contributed very good growth because we have seen a lot of freebies from the state government also in terms of waiver, some reduction in the stamp duty and all those was also favorable for Mumbai macro market. तो इसके अलावा लॉन्च एक्टिविटी भी अगर हम देखते हैं तो वो भी काफी स्ट्रांग रहा है Q1 में. तो लॉन्च करीबन 131 मिलियन स्क्वायर फीट का था एज अगेंस्ट 103 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ द लास्ट ईयर. यहाँ पर भी एक अच्छा ग्रोथ आ रहा है, लॉन्चेस काफी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सेल्स ग्रोथ इज मच हायर देन द लॉन्च. So due to that, if you see, the outstanding inventory has come down, and now the outstanding inventory is less than 2 years of sales. So it shows there is a really very healthy demand for the residential real estate. और ये जो अभी जो आप अगर sales to launch ratio देखते हैं, it is coming to 1.4 times. So that is even significantly higher than the हिस्टोरिकल लेवल ऑफ 1 टाइम. नॉर्मली जितना हम सेल करते थे उतना लॉन्च करते थे, अभी हम ज्यादा सेल कर रहे हैं, लॉन्च कम कर रहे हैं. So we'll see going forward lot of projects also getting launched in the coming years. So next slide, if you see, most important factor why the sales is such a strong demand is there because of the affordability. So if you see affordability, when we say affordability, that is basically property price that you pay divided by your annual income. So अगर ये आप पास्ट से 95 या 90 की बात करेंगे तभी हमारा 21.7 times था. That is the number we got in terms of affordability. It means like if you are earning 1 lakh, you were paying your property price was 22 lakhs. But right now, if you see, the trend is on the other way. If you are earning 1 lakh, the property price is 3 lakhs. So that kind of affordability we have seen in the real estate market. इसके पीछे काफी फैक्टर्स रहे हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी को हमें सपोर्ट किया है. उसमें गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट रहा है, हमारा डिस्पोजेबल इनकम भी काफी इंक्रीज हुआ है, एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल हैज आल्सो सपोर्टेड इजीली अवेलेबल ऑफ फाइनेंसिंग by the banks and housing finance companies has also supported this kind of affordability. If we go by next slide, that is very important. If you see where we stand vis-a-vis the global market. तो जैसा श्रीकांत ने कहा था कि हमारा जो मॉर्गेज एज ए नॉमिनल जीडीपी इज 11%, vis-a-vis China where it is around 18%, Netherlands which is highest at around 89%. तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्कोप है इंडियन मार्केट को ग्रो करने के लिए. हमारा जस्ट 11 तो वी कैन ऑलमोस्ट इन परसेंटेज ओनली दैट नंबर कैन गो 10 times from where we are. So that is the whole market. It's not like we just see one rally or one decline. Just see where we are heading towards. So there is a huge opportunity in the real estate sector. Now, most important theme that we see is the consolidation. This is why we have seen what happened 10-15 years back when a lot of real estate stocks got hammered because of corporate governance issues, lot of other I mean in terms of the balance sheet issues. So those players moved out. Now there are select strong brands in different markets. Some are pan-India also, which are leading the market, and the industry is heading towards consolidation. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिसपे 7-8 जो बड़े सिटीज हैं, वहां पर काफी अच्छा वो मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं, और ये कंसोलिडेशन थीम जो है बहुत बड़ी है अगर आगे आप देखेंगे. तो अगर आप हमारा जस्ट कवरेज कंपनीज का जो सेल्स देखेंगे, so that has grown at 1.85 times in Q1 vis-a-vis the 1.05 times of the industry. So there is a huge growth vis-a-vis the industry that we have seen in the coverage companies also. Securities का अगर बात करेंगे, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है बैंगलोर का, उसने करीबन 3000 करोड़ का सेल्स किया था
लोधा ने करीबन 2800 करोड़ का सेल्स किया, और ये सारी जो सेल्स ग्रोथ है मल्टीपल more than 4 times so vis-a-vis last year and 5 times of last year. This is kind of number we have seen in the Q1 only from these players. So the market share of the listed companies have grown to 13%, what it used to be, say, around 5-6%. I'll show in the next slide also on that. Plus, most of the players are also on track in terms of achieving their sales target which they are guiding. So this consolidation theme will continue because DLF and Lodha का जो guidance है करीबन 8,000 करोड़ या और 11,500 करोड़ का, ये numbers को they are very comfortable in achieving, so they will continue to gain the market share. So that's what we have seen. So like next year का ये आप अगर देखेंगे market share का just ग्राफ, तो प्री कोविड हम करीबन 10% के नीचे थे. इवन अभी वो देख रहे हैं जो नंबर जो 7-8 जो लिस्टेड अच्छी बड़ी कंपनीज हैं, so their market share is around say 70, that has come to around 12-13%. So and in the large 3 market it is even gone up to 20%. So that kind of number we are seeing from the large developers. So consolidation theme is continuing. Next important thing that we have seen in the recent time is the raw material price volatility, which everyone says like अगर raw material price इतना ज़्यादा move हो रहा है, so will these companies be able to sustain their profitability or not? Answer is they will sustain because they are very comfortable in taking the price hike. अगर domestic in fact prices भी off late correct हुए हैं. अगर आप स्टील की बात करेंगे तो 22% से पीक से करेक्ट हुआ था. Even if it increases, these companies can pass on these prices because अगर इसमें आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो स्टील और सीमेंट का जो शेयर है, स्टील इज अराउंड 13% and even cement if you see around less than 10%. So in that way because सीमेंट में इसके अलावा आरएमसी भी आता है और भी बहुत सारी चीजें रेडी जो लगते हैं, तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो कॉस्ट दे आर एबल टू पास ऑन. एंड वेटेड एवरेज हाइक जो उन्होंने लिया है करीबन 8-10% सारी कंपनीज ने लिया है, इसकी वजह से ये सारा जो इन्फ्लेशन था दे वर एबल टू पास ऑन. इवन इंटरेस्ट रेट साइकिल की बात करें, जैसे श्रीकांत ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट अभी मूव कर रहे हैं, अभी इट इज हेडिंग टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड. So in that case, if you see what we have realized when we have analyzed last 12-15 years data in terms of GSEC yield and residential sales volume, we could not get any strong correlation. In fact, it's a weak correlation that we have seen in between these two. So इतना बड़ा फैक्टर नहीं है. इंटरेस्ट रेट एक सेंटिमेंटल फैक्टर होता है, बट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म डिमांड को इम्पैक्ट करेगा. दैट्स व्हाट वी बिलीव. और इससे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्वेस्टर या किसी के दिमाग में होता है कि अगर मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो विल इट गो अप और नॉट. So if real estate prices are rising, investors will always be happy. If somebody is investing in a property, its prices goes up, so they will be happy. So if you see, the real estate prices have been increasing, and most of the companies have taken the price hike. Even NCR में तो 19% का एक प्राइस हाइक मिला है. तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस मार्केट में काफी आ सकता है इसकी वजह से. तो ये एक बहुत बड़ा एक सेंटिमेंटल फैक्टर होता है जो कि डिमांड को ड्राइव करता है. इसके अलावा अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे कंपनीज की, ये जो हम कंपनीज कवर कर रहे हैं उसमें अगर वैल्यूएशंस आप देखेंगे तो ब्रिगेड, डीएलएफ, गोदरेज, मैक्रोटेक, इनके वैल्यूएशन हम कंपैरिजन किया है, तो उनका जो रेसिडेंशियल बिजनेस का जो इम्प्लाइड वैल्यूएशन आता है वो स्टिल काफी अफोर्डेबल रीजनेबल लगता है. अगर आप देखेंगे ब्रिगेड, इसमें हमने क्या किया है कि जो ओवरऑल एंटरप्राइज वैल्यू में से जो लैंड बैंक या फिर जो उनका एन्युटी बिजनेस है उसको रिड्यूस किया है. उसके बाद जो इम्प्लाइड रेसिडेंशियल वैल्यू आती है उसको उनके प्रॉफिट के बेसिस पे अगर हम ईवी एबिटा देखते हैं उस बेसिस पे, तो फॉर बैंगलोर बेस्ड प्लेयर्स लाइक ब्रिगेड, like Prestige and Shobha, it is less than 4 times or something. And the highest is Godrej. That's why we have a sell rating on Godrej because of the high valuation. But we are positive on the companies like Brigade, Shobha, Prestige because of the attractive valuations as well, apart from very good performance and the fundamentals that we see. कमर्शियल की बात करें अगर, तो वहां पर भी काफी अभी ग्रीन शूट दिखता है हमें.
बिकॉज कमर्शियल रियल एस्टेट ड्यूरिंग द कोविड ऐसा लगा था कि अभी सब कुछ घर से होगा और एवरीथिंग विल बी like work from home will be the trend going forward, and that will impact the commercial real estate sector very badly, that we don't see in the recent trend that we have got. So अगर आप जस्ट अगर कंपैरिजन करेंगे, इंडियन सिटीज की बात करें तो वहां पर काफी अपॉर्चुनिटी है vis-a-vis ग्लोबल सिटीज, बिकॉज ये काफी अफोर्डेबल है. इफ यू कंपेयर इट विद से यूएस और से सिंगापुर, हांगकांग, तो इंडियन सिटीज का जो वैल्यू आता है, करीबन कैपिटल वैल्यू इज 150 to 300 डॉलर पर स्क्वायर फीट का आता है. और वही अगर हम सिंगापुर, हांगकांग और इनकी बात करेंगे तो वहाँ 2000 से 3000 डॉलर पर स्क्वायर फीट आता है. तो देयर इज अ ह्यूज price difference. So we are quite affordable. Even rental wise, we are say $1.5 per square feet in terms of rental vis-a-vis Singapore, Hong Kong at $7 to $10 per square feet. So काफी हम 1/10 है in terms of cost of rentals. इवन अगर बात करेंगे दूसरे जो फैक्टर होते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, ये ट्रेंड नहीं चल सकता है बिकॉज ऑफ हमारा जो डेमोग्राफी, इफ यू सी और द हाउस वी इंडियन जो हाउस होल्ड्स हैं वो बड़ी फैमिली होती है या फिर जो घर छोटे होते हैं, एंड इवन देयर लॉट ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, सो दैट कल्चर मे नॉट सस्टेन इन द करेंट सिनेरियो. Even lot of IT companies are talking about return to office. Infosys and TCS, they have talked about that thing. तो एक आईटी सेक्टर जो हाँ वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड लग रहा था, वो अभी ऐसा ज्यादा सस्टेनेबल नहीं लगता है मुझे. और उसके अलावा अगर देखेंगे वैकेंसीज जो है, हमने ये भी देखा है कि अभी थोड़ा ऊपर हुई है वैकेंसी वीजा भी लास्ट प्री कोविड, जो कि 12% से अभी वो 15% हो गया है. बट एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा हमने लॉन्चेस भी काफी जो न्यू जो लॉन्चेस आई हैं, न्यू सप्लाईज आई हैं, वो भी काफी ज्यादा रही हैं. इसकी वजह से भी वैकेंसी लेवल्स थोड़ा ज्यादा है. तो अगर इसी चीज को हम ग्राफ में दिखाना चाहेंगे, जो मैंने कंपैरिजन किया था रेंटल का, तो आप देख सकते हैं हांगकांग, सिंगापुर vis-a-vis where Indian cities are. Even Mumbai, which is considered to be the costliest, is much lower than what we see in these larger cities. एब्जॉर्प्शन जो नंबर हम कह रहे हैं कि हमने देखा, जो ग्रीन शूट देखा है अभी तक कि डिमांड इंप्रूव हुई है. जस्ट इन Q1 इफ यू सी 22.5 मिलियन स्क्वायर फीट का हमने नेट एब्जॉर्प्शन देखा है इन द लास्ट क्वार्टर. तो ट्रेंड्स आर आल्सो टर्निंग फेवरेबल. लीजिंग एक्टिविटीज काफी पिकअप हो रही है. इनफैक्ट जो कुछ सिटीज की मैं जस्ट बात करना चाहूंगा, जहां पर जैसे मुंबई है, वहां पर लीज रेंटल्स भी 9% से इम्प्रूव हुए हैं, करीबन 8% से इम्प्रूव हुए हैं. एनसीआर की बात करेंगे, गुरुग्राम वगैरह की या फिर नोएडा की, देयर आल्सो दैट इज गॉन अप बाय 7.5%. बैंगलोर इज अराउंड आल्सो 6.5% का कुछ है. तो लीज रेंटल्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं. तो दिस शोइंग सम पॉजिटिव साइन. हैड इट बीन देयर बीन प्रेशर, तो ये लीज रेंटल्स इम्प्रूव नहीं होते थे. और बैंगलोर की बात करेंगे तो दैट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट. बैंगलोर मार्केट particularly is the largest office market in terms of overall stock. 161 million square feet का मार्केट है. एंड वहाँ पर वैकेंसी लेवल सबसे कम है, जस्ट 6% है. एंड रेंटल्स भी काफी अफोर्डेबल है, अराउंड 83 रुपीज पे है. एंड कैपिटल कॉस्ट भी काफी ऑन द लोअर साइड है, करीबन 10 से 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट कैपिटल कॉस्ट आता है. तो इसकी वजह से वहाँ यील्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, 8.9% का यील्ड वहाँ मिलता है. So that is the speciality of Bangalore market. Coming to some of the REITs that we track and the commercial companies, तो यहाँ पर एम्बेसी REIT ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है in Q1. तो और इवन इनका जो ओवरऑल ग्रॉस लीजिंग हैज बीन इम्प्रूविंग. तो 0.4 इन द प्रीवियस क्वार्टर से अभी वो 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट का लीजिंग किया है. तो यहाँ पर एक हमें अच्छा रिलेटिवली vis-a-vis अदर ब्रुकफील्ड या माइंडस्पेस के कंपैरिजन करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा कर रहा है. So in terms of conclusion, when we say what we derive from our analysis,
is like we are positive on the real estate, particularly on the residential side. We see that the consolidation theme will continue, and this rising price will be positive for the real estate players, not the negative side. We see it's a positive that will pull more demand. And the REIT side में हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि जो अभी ट्रेंडिंग यील्ड है वो नियर टर्म परफॉर्मेंस थोड़ा सा वहां पर ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है हमें उस हिसाब से, एक्सेप्ट एम्बेसी हमें थोड़ा वहां ज्यादा रिलेटिवली बेटर ग्रोथ दिखता है विज़ावी माइंडस्पेस एंड ब्रुकफील्ड. In terms of risk, in perception, of course, interest rate can be a risk, but more from the financing perspective. Financing cost will go up, but over a longer period, that is not a big issue. Commodity inflation is a near-term, short-term issue, but that is always passed on by the developers. Most important is the regulatory side. If some changes on the regulatory side, GST or stamp duty, that changes, then that basically impacts the overall sentiment. So that we believe is a important risk. In terms of stocks that we like in the real estate space, first I'll discuss. So Macrotech, Shobha, and Prestige, these three stocks that we like in real estate sector. On Shobha, we have a buy recommendation. We have a target price of 880 rupees. We see that the land monetization will continue in Shobha, and company decent sales of the company will help them in reducing their debt. Plus the contract side also, we see recovery in the coming quarters. And the company has a very strong launch pipeline of 16 projects of around 12 million square feet. So that will also drive the sales in the coming quarters. And the stock is also available at an attractive valuation of roughly 2 times on a forward basis. So we have a sum of the parts based fair value of 880 rupees. This you can get from our website. Prestige also, we have a buy recommendation and target price of 560 rupees. And there we see rebound in the hospitality also will support, because that is one of the segment for them. Plus they have also entered into Mumbai real estate market. That will also contribute to their sales. And they're also pursuing very aggressive strategy on the rental side. So valuations भी काफी 1.6 times book value attractive है. Sum of the parts basis पे इसका हमारा 560 का target price आता है. We have a buy recommendation. And Macrotech Lodha, where we are also positive, and we believe that the company is on track to achieve its guidance of 11,500 crores in FY23. And जो cash flows जो improve हो रहे हैं, इसकी वजह से debt reduction will continue, and company will continue with the strong delivery, and stock is also attractive in terms of valuation, around 3.3 times on a price to book value on FY24. So we maintain buy on this stock as well. इसके अलावा हम कुछ अलग दूसरे सेक्टर्स से भी हमने स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं. उसमें सिप्ला पे हमारा बाय व्यू है. हमारा उस पे टारगेट प्राइस 1215 है. इसमें मोर देन 17% अपसाइड दिखता है. Interglobe Aviation, there also we have a buy recommendation. We have a fair value of 2710 rupees. We see a very good upside of 42%. Hindalco pe we have buy recommendation and target price of 550. We see roughly 30% upside. VRL Logistics, we have a fair value of 730 rupees, and we see more than 12% upside, because we have seen very good performance by logistics company, and that so VRL is one of them which can do well. SBI is expected to do well. We have a buy recommendation. We have a target price of 700 rupees. It is also indirectly on a real estate sector. Good demand from the housing mortgage will also help them in growing. IGL also we have a buy recommendation, where we have a 515 rupees and we have a target price, and there also we are positive. This company can also be benefited because of the strong performance in the real estate sector, more homes for gas supply and all. So in that way, this is our topic. Now the floor is open for Q&A. Over to Dini. Thank you, Pankaj sir. It was a very insightful presentation. Dear participants, thanks for being patient. We will now open the floor for Q&A. Before that, let me remind you to follow us on our social channels, Telegram, Insta, and Twitter if you haven't already.
and feel free to drop any feedback you have for us. Okay, now starting with the first question, which is from the real estate space. Pankaj sir, our participant Raya wants to know your view on Godrej properties. So on Godrej properties, as I said, in fact, in one of the slides I've shown the valuation table. So where we have shown that this is a most expensive stock in the space. However, the company is really very good in terms of management, in terms of the work they do, and they are a pan-India player. So going to get benefited out of this real estate boom. But in terms of valuation, we have a concern. So that's why we have a sell recommendation on the stock, and we have a target price of 1310 rupees. Thank you, Pankaj sir. Next question is from Vipin Verma. Vipin Verma is asking whether housing finance stocks will also rise along with real estate. Hemali, can you share your views on this? Thank you, Rini. So, yes, there is a direct correlation between new home loans and new real estate properties. But what we see right now from the credit side is that banks are gaining market share from NBFCs and housing finance companies in the first place. Secondly, HDFC, which is a major player, is right now in a phase of merging with the bank. So there are other extraneous concerns apart from the demand for that stock. From our perspective, we have coverage on Aavas, Aptus, HDFC, LIC, PNB, and Home First, and we are more positive on the smaller HFCs, that is Home First and Aptus, where we have a buy and an add on the stock. For LIC, we have a buy because of its cheap valuation that is currently available. So while the demand is directly correlated, we would like to also understand the other dynamics with respect to market share shifts and what their current funding mix is. Thank you, Hemali. Next question is, so do you think, Abhishek is asking, do you think it makes sense to invest in a REIT? REITs, it's a very good investment tool. Of course, if someone is playing on the real estate sector, particularly on the commercial side, this is the indirect play on the sector, on that sector. If you look at the current scenario, the yields that we see in the REITs are higher than the bond yield. So relatively in the near term, maybe the performance would be capped. However, if you have to invest in REIT only, तो इसमें एम्बेसी रीट जो है हमें रिलेटिवली ज्यादा अच्छा लगता है vis-a-vis माइंडस्पेस एंड ब्रुकफील्ड दैट वी ट्रैक. तो वहां पर वन कैन इन्वेस्ट. वी हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 405 rupees in embassy. Right. Now we have some questions from other sectors. Mohammad Azruddin is asking for views on Tata Chemicals. Jatin? Yeah. So Mohammed, if you look on the Tata Chemicals, so where we have a positive view on the stock with a target price of 1,240, we believe that industry is basically a riding tightness in the market because demand supply dynamic has changed in such a way that we are not seeing any significant increase in new supply coming for near about 18 to 24 months. So which is supporting the overall realization. So if you look the entire commodity basket in last 3 to 4 months, we have seen a sharp deterioration or the contraction in the margin across the commodity, except for soda ash, because soda ash players are able to pass on the entire increase in the cost to the end users, which are detergent, solar glass manufacturers, or you name the other glass manufacturers. So we believe that yes, the tightness in the market is expected to stay for next 18 to 24 months till the time where we don't see any new capacity coming in. And globally, you see that entire soda ash capacity is likely to grow by 2% annually, which will give an incremental demand to 1.2 lakh tons, for which there is no capacity. So definitely this tightness will lead to a firm pricing and a better performance from all the soda ash players, for which Tata Chemicals is also one of them. Though management has drawn up the plan to substantially expand their soda ash capacity in the coming years, but nothing in the next
18 to 24 months. So given the positive business development and the momentum, we continue to maintain a positive bias on the stock with a fair value of 1240. Thank you, Jatin. Atul Manjra wants to know views on Tata Consumer. Amit sir, can you please share your views? या अतुल, हमारा टाटा कंज्यूमर पे एड रेटिंग है, लेकिन अभी कैसे शेयर प्राइस हमारे टारगेट प्राइस के ऊपर चल रहा है. हमारा टारगेट प्राइस 800 का है. टाटा कंज्यूमर बहुत ही एक बढ़िया कंपनी है. Q1 में उन्होंने काफ़ी स्टेबल नंबर्स रिपोर्ट किए. कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी डाइवर्सिफाइड है. कंपनी टी में है, कॉफ़ी में है, बेवरेजेस में है, फूड के हर एक सेगमेंट में है, और कंपनी का एक चेन भी है, स्टारबक्स चलाती है कंपनी. अभी आप Q1 में परफॉर्मेंस देखो तो थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर था, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल था. कंपनी ने हाल ही में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए विच हैज पिक्ड अप पेस एंड इट्स डूइंग वेरी वेल इन नियर टर्म. मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है डबल डिजिट ग्रोथ एंड डबल डिजिट मार्जिन. कंपनी इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग a wide distribution range also. मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है. कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी स्ट्रांग है, और हाल ही में उन्होंने थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग भी किया कि सारे सिमिलर बिजनेसेस को एक ही सेगमेंट के अंदर ले आए. तो ओवरऑल वी आर वेरी पॉजिटिव ऑफ द कंपनी एंड आई बिलीव दैट कि गोइंग फॉरवर्ड वी विल अपग्रेड द स्टॉक एंड वी आर पॉजिटिव ऑन द स्टॉक. Thank you, Amit sir. Next question is from IT space. Iqbal wants to know view on Wipro, and Anil Patkar wants to know views on TCS. Sumit sir, can you please help? Yeah, sure. So IT sector mein we are not very bullish on Wipro because of multiple reasons. Growth rate is not as strong as compared to other peers. So, and valuations are also expensive on considering the earnings growth trajectory. So we are not very bullish on Wipro. Rather, we are suggest to reduce the position in Wipro. First, second, you asked for what TCS. TCS way we are positive, but we are recommending add on the stock. That means if stocks fall down, then you have to buy this stock. Our fair value is 3,400 rupees. From today's current market price is almost 13% upside is available. So the story remains for IT intact. However, the rising concerns of recession in US and concerns in European markets are leading to correction in IT sector per se. But from a longer term perspective, you are getting a good management, good business model at a reasonable valuation. So one can start accumulating these stocks from current levels also. So we remain positive on TCS. Wipro, you can reduce your position gradually. Thank you, Sumit sir. Next question is from Vikram Raj. He wants to know views on Sun Pharma. Purvi, over to you. Yes, thank you, Rini. So Sun Pharma pe we have a ad rating and the fair value is 1040. So this is like almost 19% upside from the closure of the stock price, and we like the stock. That's basically because the unki jo specialty pipeline hai, all the products have now started finally doing well. So US में उनका प्रेशर जो प्राइसिंग प्रेशर जो सारी कंपनीज बात कर रही है वो कुछ हद तक कम भी हुआ है. दूसरा फोकस उनका डोमेस्टिक मार्केट पे है जहाँ से ज्यादातर उनका काफी सारा portion of the business comes from India. So that again is also doing quite well for them. So we feel कि despite उन्होंने बोला है कि R&D cost उनका थोड़ा high हो सकता है आगे के कुछ quarters में, but the cost structure that they have, the initiatives that the company has taken to control costs will some extent help mitigate the increase in the R&D costs also. So all in all, we feel that they are on the track to grow their earnings by 12% of compounded annual growth rate over next 2 to 3 years. And we feel that they are much better placed when it comes to in terms of both US and domestic markets. So that's why we like the stock, and it's also one of our preferred picks apart from Cipla.
Thank you, Purvi. Now, next few questions we have from real estate space. Pankaj sir, so one question is, why should one invest in real estate stocks than buying the property directly, assuming investment size and quick liquidity is not a constraint? It's a very interesting question. I believe everyone will have this in the mind. Why not to play directly in the real estate property rather than buying a stock? But I would say both are different things. If you are looking at real estate as an investment, you need to diversify your risk, because investment always requires a risk diversification. When you are putting all your eggs in one basket, then there is a risk issue. So if you are buying a property or say few properties, you're not diversifying the risk. Returns profile are also, you cannot compare it vis-a-vis the stocks. Why? Because the stocks, the companies which manages all these properties or develop these properties, they are experts. They are present in different markets. They launch projects based on demand. And post-RERA, the things have changed. If you have asked this question, say 10, 15 years back, the answers might have been different. But now the scenario has changed. अभी काफी ज्यादा रेगुलेशंस हैं, रेरा आने के बाद काफी चीजें जो जितनी इनएफिशिएंसीज थे जो सिस्टम में, वो रिमूव हुई हैं. इसके और रिपोर्ट जो कंपनीज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है काफी इंप्रूव हुई हैं. जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अच्छे कर रहे हैं. तो आज के डेट में जो रियल स्टेट के स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, vis-a-vis what you had done in 10-15 years back, जब काफी फर्क है. इसलिए रियल स्टेट स्टॉक, आई वुड से, इफ समवन इज लुकिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, रियल स्टेट स्टॉक investment the real estate stock is a good alternative. One should go for it. I don't see any major risk, issues on that vis-a-vis directly putting in the property. Right. So Rachit Sharma wants to know the future of real estate in Noida, Greater Noida. So the question has come for a particular micro market which has seen a lot of pains. If we see past में काफी issues हुए हैं, और वहाँ पर हमने देखा जैसे अमरपाली का केसेस थे या फिर यूनिटेक हुआ, ये सारी चीजें हुई. Lot of investors or those who have invested in the property got battered very badly. लेकिन अभी अगर कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो नोएडा या ग्रेटर नोएडा माइक्रो मार्केट में लॉन्चेस एक्टिविटी काफी स्लो डाउन हुई है. और अभी भी हालांकि अनसोल्ड इन्वेंट्री करीबन 38% है, जो कि रिलेटिवली काफी बड़ा है vis-a-vis if you compare with Gurugram where it is 25%. लेकिन things are improving, I believe, though we can say still we have to wait for some more time. Most important factor that one can track is the prices in the NCR has gone up by 18%. If you see last quarter, it has gone up. So वहाँ पर price hike अभी मिल रहा है after very long time. So things are improving. That's what I can say for Greater Noida and Noida market. And one factor, if you see Godrej, when Godrej launched the project, they sold the whole pre-launch in just one day. So that is giving you an insight. If one goes for a good reputed builder, reputed developer, there is no issue. Right. So we have two questions from Ravi. Ravi wants to know which is the best play for commercial real estate. And secondly, he is asking for views on Prestige and Brigade. And he's specifically asking this question to Shrikant sir. So commercial, Shrikant sir. On the stocks, first one you can answer. Yeah. Commercial one, yeah. Okay. So commercial side, as I said, the things have started improving. In the last quarter, we have seen good absorption, and even the lease rentals have also gone up. इसमें जो एक REIT में one can go for investing. Somebody is looking for REIT as a segment. Otherwise, we like Prestige, which is also very much aggressive on the annuity portfolio. So that is of course a mixed use development player, but they are very strong in the commercial. One can go for that stock where we have a buy recommendation. Right. Shrikant sir, would you like to answer the second question on Prestige and Brigade? Sure.
I think both the companies are doing well, and both are placed in the what I can say is that on the buy side from our side, and whenever like we see any momentum in the market, most of the time we see a lot of activity in Brigade as compared to Prestige. So the if you like really want to take any short-term call or short-term view on the stock, short-term I mean to say from here uh, for at least next 3 months, then we should look for Brigade. But if there is a medium to long-term view, then I think Prestige, Shobha Developers, they are really strong bets to buy and sit on it. Also, if we go through with other companies from the same basket, then number of stocks have very high beta, and they are participating whenever there is a momentum in the market. So you can trade also, you can invest also, but yes, personally, I would say, as Pankaj said, that we should be buyer in the companies with a medium to long term. Thank you, sir. Now, next couple of questions are for Amit sir. Amit sir, your views on ITC. Amit sir, you are on mute. ITC में हमारा एड रेटिंग है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 337. हम लोग काफी सारे क्वार्टर से स्टॉक पे बुलिश है, लेकिन स्टॉक ने लास्ट 6 महीने में काफी अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस दिया है. अगर आप रिसेंट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखो तो सिगरेट रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रो हुआ है, 29% ईयर ऑन ईयर. एफएमसीजी बिजनेस ने 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है, और होटल एंड पेपर बोर्ड ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट. Stock has gained almost 40% so far in 2022 and its highest level in this year. EC जो issues है which was related to selling by FPIs have seemed to be over in the stock. Even at current levels of 330, ITC offers a very good combination of good growth, dividend yield of 4%, and inexpensive valuation of 20 times FY24 earnings, which is almost at 50% discount to peers in the FMCG space. कंपनी की एक आईटी सब्सिडरी है आईटीसी इन्फोटेक, जो आईटीसी ट्राई कर रहा है उसे लिस्ट करने का, वो भी काफी वैल्यू ऐड करेगी. तो हमारा एसओटीपी बेस्ड टारगेट प्राइस है 337 फॉर द स्टॉक, एंड वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द स्टॉक. Amit sir, could you also share your views on VRL Logistics and Blue Dart? देखो, आप लॉजिस्टिक्स देखो तो लास्ट 2-3 सालों में ना लॉजिस्टिक्स में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आया है. हर एक कंपनी का वॉल्यूम्स काफी ग्रो हुआ है, especially after GST implementation. Blue Dart is a very niche company and it does very well in the courier space, or it offers both एयर सर्विस एज वेल एज रोड सर्विस, और इसके कॉम्पिटिटर्स है डिलीवरी एंड टीसीआई एक्सप्रेस. लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और उनका ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 12% टू ऑलमोस्ट 20% now. And going forward also, we believe the company will do very well on each and every parameter. कंपनी का जो प्रमोटर है DHL also adds lot of value to the company. और आप देखो तो उसके जो प्रोडक्ट्स है which is also very niche and it commands lot of premium to other peers in the industry. So we are very positive on the company, और हमारा buy rating है with a target price of 9,800. हमको VRL भी बहुत अच्छा लगता है. VRL प्राइमरली ट्रकिंग सेगमेंट में है और लेस देन ट्रक लोड सेगमेंट में काम करता है, और लास्ट कुछ क्वार्टर में देखो तो इन्होंने भी काफी सारा बिजनेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ले लिया है. और अब देखो तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में हैव बीन अराउंड 15% ईयर ऑन ईयर. आप देखोगे तो इनका भी ऑपरेटिंग मार्जिन्स व्हिच यूज्ड टू होवर अराउंड 11 to 12% has improved to 18% currently, and management is also very strong for the company, and
इनका एक बस सेगमेंट भी है विच वाज टिल सम टाइम मेकिंग लॉसेस. अगेन बस सेगमेंट का भी परफॉर्मेंस लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली. और विथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, हमें ऐसा लगता है कि VRL विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट. और हमारा PRL पे बाय रेटिंग है विद टारगेट प्राइस ऑफ 730. एक एडिशनल पॉइंट है कि PM मोदी विल बी लॉन्चिंग नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी टुमारो. और इसमें एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये है कि the cabinet will focus on bringing down the logistic cost for all the corporates. So this is going to be a big positive for most of the logistic companies. इनको industry status भी मिल जाएगा. मुझे लगता है कि it's a big positive for logistic companies. Thank you, Amit sir. Now, due to time constraint, I'll take one last question. Sunil has one question for Jatin. Jatin, whether one can hold Vedanta after the clarification from management about its decision to keep chip manufacturing investment options in its holding company. Over to you, Jatin. Sunilji, a good questions on Vedanta. Definitely the stock was in a limelight since last few days and has crossed over 300. So अगर आप हमारा, if you look from a Kotak Securities perspective, we have a reduced rating with a target price of 230. But if I'm looking from the overall perspective, if you look at the aluminum space where the companies placed time in, along with zinc, lead, oil and gas, we believe that in aluminum, definitely there could be a future triggers in terms of the volume growth as well as the pricing. So we believe that supply risk is likely to come again back in the aluminum market, which will support the prices. Secondly, the zinc business along with aluminum will drive the growth as companies, Hindustan Zinc, where the Vedanta holds majority of the stake, has completed the expansion to 1.2 million ton, and they are working to increase their capacity to 1.35 million ton. This, along with their zinc international business, Gemsburg, will help the company to achieve the desirable numbers in the zinc business. The only key overhang stock was the VRL, which is the parent company, where they had a debt repayment of $2.8 billion, of which 1.5 they have already paid because of the dividend paid out by the Indian company. However, the remaining $1.5 billion, management is quite confident that they will be able to pay in this financial year, which means that there could be a possibility of the one more round of dividend that we can hear, either from a Hindustan Zinc or Vedanta, because Vedanta has a policy that whatever dividend that Hindustan Zinc announce, they will pass on to the Vedanta shareholders. So yes, we believe that the stock is anyways trading about our target price. Sorry, but there are near-term triggers which can probably support the stock. But we'll wait for the management commentary on post their Q2 numbers before we change our view or the rating on the stock. So as of now, we have a reduced rating with a target price of 230 on Vedanta. Thank you, Jatin. We now end the Q&A session here. We had an amazing participation and interesting questions coming in today. I would now like to invite Shrikant sir for closing comments. Sir, also if I can squeeze in one more question for you. Nishikant wants to know sectors good for long-term investment in present scenario. I think, see, right now, if we just go through with the current structure of the market, then broadly, we are of the view that the market should do well in the near term to long term. It is now completely depending upon how actually this credit Fed policy goes on 21st of this month. So in the short term, we may see some vibration in the market. Markets are already under fear and we are seeing some correction. तो हमने अच्छा खासा correction भी देखा है. बट साथ साथ अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ हो रही है और काफी एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन मार्केट का बन रहा है. अगर मैं बहुत वेरी क्विकली अगर मैं कुछ मैक्रो डेटास को अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये जो फियर है वो
आज का जो मार्केट में जो एक हमने डाउनवर्ड एक्टिविटी या एक बड़ा सेल ऑफ देखा था, उसका मेन रीजन यही था कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है यूएस का और जो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है, उनके बीच में जो एक गैप होता है, वो गैप अभी 45 पैसे का हो गया है, 45 बिप्स। और अगर ये 45 बिप्स का अगर हुआ है, दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म में वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और शायद थोड़े एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। एक्सपेक्टेशन 75 बिप्स के हैं, शायद 100 बेसिस के भी हो सकते हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस है। सो काफी सारा एक पर्टिकुलर इसी वजह से एक मार्केट में जो वीकनेस जो हमने देखा है वो इसी वजह से देखा था। और आज के पूरे दिन में हमने देखा कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 3.45% के करीब था, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड अराउंड 3.90% के करीब ट्रेड कर रहा था, और इसी वजह से मार्केट में कंसिस्टेंटली हमने एक बड़ा वीकनेस देखा। साथ ही साथ अगर यूएस मार्केट्स में अगर आप देखें तो वहां पे भी हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा था। ब्रॉडली हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में यस, मार्केट्स आर पॉइज्ड टू गो डाउन। पॉसिबल है कि हम करंट लेवल से एक बार 17,000 के लेवल्स देख सकते हैं। अगर फंडामेंटली भी अगर मार्केट देखे तो इस लेवल पे बेस्ड ऑन ईपीएस, जो एक्सपेक्टेड ईपीएस होती है FY24 की, अगर हम उसे कंसीडर करें तो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो अपने मार्केट जो है वो कॉस्टली है। और अगर यहाँ पे अगर 75 बिप्स अगर 100 बिप्स की अगर रेट हाइक अगर आती है तो डेफिनेटली हम मार्केट में एक डाउनवर्ड एक्टिविटी देखेंगे, बट इमीडिएटली मार्केट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दी नेक्स्ट फ्लोज। सो मुझे लगता है कि ये जो पैनिक रहेगा या ये जो भी एक जो इवेंट है वो वन टाइम रहना चाहिए, और आफ्टर लाइक फेसिंग टू दैट इवेंट मुझे लगता है कि वापस मार्केट एक अपने प्रीवियलिंग ट्रेंड में वो कन्वर्ट हो सकता है। आई एम टू से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो बिटवीन 17,000 टू 16,800 हमें लगता है कि अगर मार्केट में कोई करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल वहां पे लॉन्ग पोजीशंस बनाए। हमें लगता है कि वापस मार्केट वहां से रिबाउंड कर लेगा। बट इन केस अगर मार्केट 18,100 के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो फिर तो हमें लगता है कि शायद मार्केट 18,600 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। अदर देन दैट अगर डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वो भी 109.5 के करीब है, लेकिन गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड जो 1720 के करीब ट्रेड कर रहा था, नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 1660। तो यहाँ पे भी ये इंडिकेशन यही आ रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद अच्छे खासे बढ़ सकते हैं, और इसी वजह से मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सेक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि हमें उन सेक्टर्स पे फोकस करना है जहाँ पे द ग्रोथ इज वेरी क्लियरली विजिबल, जैसे कि ऑटो सेक्टर है। काफी सारे स्टॉक्स है कि जिसमें अपसाइड, डिसेंट अपसाइड इज देयर। प्लस इंडिया के लिए फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा और यहाँ से लेकर दिसंबर तक मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक हमें मोमेंटम ऑटो कंपनी से देखने मिलेगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, शायद मुझे लगता है कि कुछ अपग्रेड्स और अशोक लेलैंड्स के लिए आ सकते हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि ऑटो सेक्टर पे फोकस करना काफी जरूरी है। काफी अच्छे करेक्ट हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद इन द नियर टर्म, शायद आने वाले 1 या 2 दिन में जो फेड की मीटिंग है वो 21 को है, यानी कि जो भी इवेंट होगा वो 22 को होगा इंडिया के लिए। तो गुरुवार तक का टाइम है। मुझे लगता है थर्सडे तक मार्केट में अगर करेक्शन चलता है तो हमें ऑटो कंपनीज पे फोकस करना है। लॉजिस्टिक कंपनीज के ऊपर जैसे भी बात की थी अमित ने, हमें लगता है कि वो सेक्टर काफी बुलिश है, वहां पे फोकस करना जरूरी है। काफी सारे कंपनीज है एंड काफी एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर फोकस करना है तो हॉस्पिटल्स से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, जैसे कि एस्ट्रोडीएम है या तो मे बी अपोलो हॉस्पिटल है, वहां पे फोकस करें। NH, सो दीज आर द कंपनीज। IT के अगर ऊपर बात करें तो IT ये काफी सेंसिटिव रहेगा टू द फेड पॉलिसी, और जब तक फेड पॉलिसी से स्पेसिफिक आउटकम बाहर निकल के नहीं आते तब तक हमें लगता है कि IT में एक प्रेशर बना रहेगा। अगर यहाँ से लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो बिल्कुल जो हमारे टॉपिक्स है जैसे हमने अभी बात की थी, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। हमें TCS अच्छा लगता है, हमें इन्फोसिस अच्छा लगता है, टेक महिंद्रा अच्छा है, लेकिन एक यहाँ से जो व्यू है वो 12 मंथ्स का है, शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं है। और इस वजह से लगता है कि वहाँ पे ट्रेडिंग के बजाय अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और रियल एस्टेट की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। FI की बाइंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर राइज इन द इन्फ्लेशन रेट इन US, हमें लगता है कि थोड़ा वहाँ पे एक स्लगिशनेस देखने मिल सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि इंडिया कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ FI's इन्वेस्टमेंट्स। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो मैं क्विकली कवर करना चाहूंगा वो है इंडियन बॉन्ड्स, और जो इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं वो अगर JP मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में अगर इंक्लूड अगर हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा एक व्यू बन रहा है कि शायद जो रशिया के जो बॉन्ड्स हैं उसे एक्सक्लूड करेंगे, उन्हें निकालेंगे।
और अगर उस बॉन्ड इंडेक्स में से अगर रशिया के अगर बॉन्ड्स अगर निकलते हैं और अगर इंडिया के बॉन्ड्स को अगर थोड़ा अगर रिप्लेस किया जाता है या तो अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर वेटेज दिया जाता है तो वो एक इंडियन मार्केट्स के लिए बड़ा ट्रिगर रहेगा। तो इन सब ट्रिगर्स के ऊपर फोकस करना है और मार्केट को देखना है। हमें लगता है कि बिल्कुल इस मार्केट में भी आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें और हमने उन स्टॉक्स को सजेस्ट किया है जहां पे अपसाइड इज क्वाइट डिसेंट। तो आप उन सभी स्टॉक्स में फोकस कीजिए और जो भी करेक्शन आता है आप उसमें इन्वेस्ट करते चलिए। दैट्स इट। Thank you, Shrikant sir. I hope you guys enjoyed our webinar as much as we did. If your queries were not answered today, come back again next time. Thanks for tuning in today. Have a great evening ahead. Thank you.